ओम शांति। गौतमी बहन, तो भाई ने अभी लॉगिन किया नहीं है जी। मैं इंतजार कर रहा हूँ, जैसे ही जी। वो लॉगिन करे हम शुरू करेंगे। आई एम हियर। हम लोग बाबा को याद करेंगे तब जी। तक, जब तक जी। भाई है। जी। शुक्रिया।
अब शांति, अभी 5-7 मिनट लगेगा। मेरी बात अभी ईस्टर्न भाई से हो गई है। उनको थोड़ा ट्रैफिक में लेट हुआ है और 5-7 मिनट में वो पहुंच जाएंगे। तो प्रोग्राम थोड़ा 10-1 मिनट आज टोटल लेट शुरू होगा। अब शांति।
Cannot hear. Brother Easton, cannot hear. You are not audible. Okay, on mute. Good. Okay. Oh, sorry about the delay. Hearty welcome, 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 hearty welcome, 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 hearty welcome, welcome, welcome. Oh, welcome with these flowers. Om Shanti Manish bhai. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, brother. Om Shanti. How are you? I am good, thank you. Sorry about the delay. No problem. It's a drama. Okay. Everything is as per drama, and Yes. okay. Sure. Eric, you have been host now, so would you please appoint me as a co-host, brother? Say again? You have been appointed as a host in this meeting, so please, would you please appoint me as a co-host, your host? Yes, sure, sure. Please appoint me as a host. Otherwise, I can't do anything from here. Okay. That's Okay. why I'm So already welcomed it myself. yes, you be the host, co-host. No problem. You appoint me as a co-host or host. Thank you. Well, whichever is easy for you. Whatever, host, co-host, please you appoint me. Well, host or co-host, whichever. I don't mind which one. You have to appoint me. गौतम में आप भी कर सकते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि होस्ट ही कर सकता है. मैं co-host हूँ और इधर options में I cannot do anything. Okay, brother It is not. इसमें नहीं लिखा है कि मैं आपको co-host या host दे सकती हूँ. Okay, ये host कर पाएगा. Brother, you are host of this meeting, and please appoint me as a host or co-host. Otherwise, I can't operate anything from here. So if I say host, then you can operate. Yes, you have to appoint me. By mistake, I have appointed you as a host, and I can't do anything from here. What do I need to do? You right click on my name, BK Himani, your right side, top right side, 3 dots are there, and you can find the option there. Okay, 1 second. Okay. Right. 3 dots. 3 dots. 3 dots. Yes. Click on that. No. You will find menu. Okay, I think I might have pressed the wrong thing. Because I'm not so good with this Zoom. So do I go to... Brother Easton, it's very easy. Just take your cursor, move your finger on the image of Brother Minesh. Okay. And in the corner, you see mute and ... 3 dots. Take the cursor on the ... There's 3 dots at the end? Yeah, at the end, at the corner, yes. Okay. So just take it and then do a right click. Right click, wow. Yes, and you get options. And just choose make host. Oh. Click it. कोई बात नहीं गौतमी बहन, आप मैनेज कर लीजिए, आप कोहोस्ट तो है ही है. It's not coming up. Okay, no problem, brother, no problem. गौतमी बहन सुनिए, इसमें टाइम बच जाएगा. सुनिए, हाँ जी.
आप मैनेज कर लीजिए आप और इंट्रोड्यूस कर दीजिए. हाँ, no problem. Okay, brother, leave it, forget it. And Yeah, Sister Gautami is there with us, and she is a translator. She yeah. will translate for us here. Okay. Okay, So okay. we all are eager to listen to your experience. Now we have little time today, so please start. Okay. Ben, So सारा आपको Yeah. and First of all, I welcome you, brother Easton, thank you, all the sister. way from Thank- UK with this wonderful flowers from Ah, Lagos, all ah. from Baba's garden of Allah. बहुत अच्छा. And welcome to brother Minesh and to all those who are listening. सभी जो पधारे हुए इस मंच पर, इस मिलन मुलाकात में जो भी मौजूद है और YouTube में भी जो भी देखेंगे, सभी को वेलकम है, स्वागत है इन फूलों से. Thank you, G. So, I came into Gyan in 1997 in January, which is, I feel, is a very auspicious month in Baba's meeting. मैं And ज्ञान में 1997 में आया yes, और uh-huh. जनवरी मास में आया और जनवरी मास बहुत ही महत्वपूर्ण ऑस्पिशियस अर्थात पुण्य मास है, क्योंकि हम सबको पता है बीकेएस के लिए जनवरी मास अव्यक्त मास है. So I was introduced by a brother who is called Brother Saul Ray, and he introduced me to another brother who introduced me to the Baba's University. मुझे एक भाई ने यहाँ परिचय कराया. एक भाई का नाम है सोल रे और उसने दूसरे भाई से परिचय कराया और वो मुझे यहाँ लेके आया. So he took me to the university. On this day, there was two sisters, one English sister and one Indian sister. And then they were looking at each other to decide who was going to give me the course. And the English sister looked at me and she said, "Oh, I will take him." And that was the beginning. ये भाई मुझे इस विश्वविद्यालय में उस दिन जनवरी मास में लेके आया और फिर जैसे मैं प्रवेश किया, दो बहनें थी, एक अंग्रेजी बहन थी, एक भारतवासी बहन थी. दोनों एक दूसरे को देखने लगे, अभी इस भाई को कौन राजयोग कोर्स कराएगा करके. फिर तुरंत वो अंग्रेजी बहन ने कहा, ठीक है, अभी मैं इस भाई को कोर्स कराऊंगी. बस वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई. So we decided to start on this day, and the sister, she was called Barbara King, and she said, she gave a meditation commentary, and the meditation commentary, it was so wonderful, just so wonderful. I then sat and I was listening to the commentary, and I was overwhelmed with her sharing. बहन का नाम बारबरा किंग है और पहले ही उसने मुझे बिठाकर राजयोग मेडिटेशन कमेंट्री कराया और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अद्भुत महसूस हुआ कि मैं क्या बताऊं, और बहुत अच्छा लगा. वो जो भी कह रही थी मुझे बहुत अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा था. So after the first session, when the first session had finished, I had a feeling that I've never felt before, and my inner voice was saying to give the sister a hug because I felt so good. But then another voice was saying
don't hug her. And I said, okay, I won't hug her. तो पहले सत्र में ही मुझे इतना अच्छा लगा और पूरा सुनने के बाद मुझे ऐसा कभी इतना अच्छा अलग सा अनुभव हुआ और ये अनुभव ऐसा था कि मुझे उठ के बहन को एक जोर से गले लगाने का मन किया। मेरे अंतरात्मा की ये आवाज थी, बस गले लगा लो, पर अंदर से एक और आवाज थी, रुक जाओ, तू गले नहीं लगा सकता, ये बहन है। और मैं रुक गया। The feeling was very special. It's like she was like a mother to me. The feeling I was feeling, even my own Lockheed mother, I did not have that kind of a feeling. So after the voice said not to hug her, I decided, okay, we finished the session. It was a beautiful session, the first one. तो अंदर से जो आवाज आया, मुझे उस वक्त ये अंदर से ये अनुभव हो रहा था कि ये मेरी माँ है। ये जैसे बहन नहीं पर मेरी माँ, माँ की तरह मुझे बहुत ही विशेष अंदर से उसके प्रति भावना आई। क्योंकि मैंने कभी अपने लौकिक माँ के प्रति भी ऐसा मैंने अंदर से वो भावना महसूस नहीं की और ये मातृत्व की भावना अति विशेष थी मेरे लिए। इसीलिए मुझे गले लगाने का मन किया, पर जब वो आवाज अंदर से आया कि नहीं, तो फिर मैं रुक भी गया और मुझे वो अच्छी फीलिंग से मैं रह गया। What was your last word, brother Easton? Well, when I finished the session, that first session, the sister then said to me, when would I like to come back? And I said, can I come back tomorrow? Because the feeling was so nice. I wanted to keep it actually going. तो वो बहन ने मुझे वो पहली सत्र के अंत में उसने मुझे पूछा, बारबरा बहन ने, कि भाई आप कब आना चाहते हो फिर से? मुझे इतना अच्छा लगा। Just a minute. I think you are on mute. Please unmute yourself. Yes. Unmute. Yes. Is that okay? Absolutely. Okay. So after the first day, I was booked in for the second lesson. But what I felt was when I went home and I had my first night's sleep, it was a sleep that I cannot forget. Because when I woke up in the morning, I realized that my bed sheet was intact. I did not move. And I said to myself, I had a good sleep. ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय था क्योंकि जैसे ही सत्र समाप्त हुआ, मैं घर गया और रात को उस दिन जो सोया, जीवन में ऐसा मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ। इतनी अच्छी सुखद गहरी नींद हुई और सुबह उठ के जैसे मैंने मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी नींद बहुत अच्छा गुजरा करके मुझे लगा। उठ के देखा जो मेरे बेड शीट है ना, बेड को इतना अंदर से टक किया हुआ था, एक भी ऐसा मतलब फोल्ड नहीं था, तो अर्थात मैं हिला ही नहीं ज्यादा और फिर मुझे अच्छा आराम भी महसूस हुआ। So that was my first realization of having done the first lesson of being the soul. And I came back the next day eager to have my second lesson, because the first lesson, as we know, is soul, and then the second lesson was supreme soul. तो मेरा ये पहले दिन का पहले सत्र का इस कोर्स का अनुभव तो बहुत अद्भुत रहा, इतना अच्छा रहा। उसी उमंग उत्साह के साथ में दूसरे दिन भी पहुंच गया। हम सबको पता है
कि ये राजयोग मेडिटेशन कोर्स में पहला सत्र आत्मा का होता है और मुझे आत्मा का बहुत अच्छा अनुभूति हुई और दूसरा सत्र परमात्मा का होता है और मैं दूसरे दिन पहुंचा दूसरे सत्र के लिए। So my second lesson began, and again, I was feeling somewhat overwhelmed. It's even like I'm speaking now. I am feeling that feeling like I felt the first time. Happy. I've never felt like that before. So, yeah. दूसरा दिन भी कुछ कम नहीं था, मुझे इतना अंदर से ओवरवेलमिंग फीलिंग थी, बहुत अच्छा, मतलब जैसे मेरी खुशी उबड़ रही थी अंदर से, तो इतना अच्छा मुझे लगा कि पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था, ये सच में विशेष है। So that was, I can't remember the whole feeling of that second lesson, but I knew that I was introduced to the Supreme Soul in a sense, because when I came to Raj Yoga, I was a Rastafarian, like sannyasi, but I then had the introduction of Supreme Soul, which I've never heard before. So it was interesting to learn about Supreme Soul. एक और बात पहले जो बताया था मैंने मिस कर दी। उन्होंने कहा भाई ने कि जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ मेरा अनुभव के बारे में, मैं अभी भी वो महसूस कर रहा हूँ, मुझे अभी भी वो याद है वो पहले दिन का अनुभव और मैं अभी भी आपको बताते बताते अंदर से महसूस कर रहा हूँ। फिर अभी उन्होंने कहा कि मैं ये यथार्थ शब्दों में नहीं बता पा रहा हूँ, परंतु मैं एक्चुअली उस वक्त एक सन्यास जैसा ही था राजयोग मेडिटेशन कोर्स करने से पहले, और वैसे ही उसी अवस्था में मैं पहुंचा और परमात्मा का परिचय सुना। ऐसा परिचय परमात्मा का मैंने कभी पहले नहीं सुना था, ये मेरे लिए बड़ा रोमांचकारी था, बड़ा अच्छा था। So I realized that I was introduced to God, and I thought, wow, it's so wonderful. The second lesson, I had finished the second lesson, then I'm moving on to the third lesson. Could have been karma, drama. I can't remember the second lesson, what it was. But all this time I was so excited. I just wanted to learn and learn and learn. तो दूसरे दिन मैं गया और परमात्मा का परिचय मुझे मिला और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा। और उसके बाद उन्होंने जो परमात्मा के बारे में कहा वो मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे हर दिन में गया और सीखा। मुझे यथार्थ याद नहीं है कि तीसरा या चौथा सत्र में पहले कर्मा था, ड्रामा था, परंतु मैं सुनता गया। मेरे लिए ये बहुत अच्छा है कि मुझे और सीखना था और सुनना था और सीखना था, बस। The person who introduced me, he was also a Rastafarian, but he did not finish his 7-day course, and he came to the sister who was giving me the course and said, "Sister, can I come and finish my 7-day course with you?" And she said, "No, you cannot. You have to go back to your teacher and she will give you the rest of the course." You know? So जो एक्चुअली व्यक्ति मुझे यहाँ इस विश्वविद्यालय को परिचय कराया, उन्होंने भी ये कोर्स पूरी तरह नहीं किया था। तो जैसे मैं अनुभव कर रहा था, मुझे देख उसको भी बहुत प्रेरणा मिली। तो वो आया और मेरी टीचर से मिला, अर्थात बारबरा बहन से मिला और बोला कि सिस्टर मुझे अपना 7 दिन का कोर्स कंप्लीट करना है। तो बहन ने कहा, देखो तुम मेरे साथ तो अभी कोर्स मैं तो नहीं करा सकती हूँ, तुम अपने टीचर के पास जाओ, तुम्हारी जो टीचर है ना वही तुम्हारी वो 7 दिन का पूरा राजयोगा मेडिटेशन कोर्स कराएगी। वास्तव में वो जो मुझे इंट्रोड्यूस कराया वो व्यक्ति भी अरिस्टोफेरियन अर्थात सन्यासी ही था। So after completing the 7-day course, I think
I can't remember which day it was that I came into to take Baba's knowledge, but I remember the sister was talking about purity, peace, all the virtues that we should have and what we should do and what we shouldn't do. And I remember when I first decided not to eat any more flesh, my mom, it was a Sunday. So my mom, she had cooked some rice and peas and chicken, which is a traditional Sunday dish. And I said to myself, I had a feeling that I didn't want to eat the chicken. So I left it till the morning. And in the morning, I said I will have it as breakfast. In the morning, I didn't feel like having it. So I said, मुझे यथार्थ याद नहीं है वो कौन सा दिन है जो मैं ये कोर्स करना शुरू किया, पर मुझे इसी तरीके से याद है कि बहन जिन्होंने मेरी कोर्स कराई, उन्होंने मेरे को पवित्रता के बारे में समझाया, ज्ञान पूरा समझाया, शाकाहारी होने का भी समझाया। और मैं शाकाहारी कब बना, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं है एक्यूरेट, परंतु वो एक संडे का दिन था। मेरे माँ ने मुझे बहुत अच्छा चावल में वटाना डाला और फिर चिकन अच्छे से बना के रखा, और वो हमारा रविवार का मतलब एक ट्रेडिशनल डिश है, मतलब हमेशा बनने वाला एक व्यंजन है खाने भोजन में। और परंतु मैंने कहा मैं अभी नहीं खाऊंगा, इसको मैं सुबह खा लूंगा। और सुबह उठा, देखा फिर से, बोले मैं नहीं खा सकता अभी। इस तरीके से मैंने नहीं खाया और छोड़ दिया। You left it later, isn't it? Huh? You left the chicken later. Yes, I said I didn't feel like I wanted to eat it. It wasn't like, I don't know what it was, but I didn't feel like I could eat it. So I said I will leave it for breakfast in the morning. In the morning came and I couldn't eat it. I didn't feel like eating it. Like something was saying maybe no, I don't know. Then lunchtime come, I said I will make some salad and then I will have with the chicken, and I didn't eat. So then come evening time, I had to go to work. And my mom always taught me that waste not, want not. So I decided not to waste the food, and that was the last time I ate some chicken, so to speak. तो जब मेरे माँ ने वो भोजन बनाया मेरे लिए, मैं पता नहीं क्यों अंदर से मेरे को लग रहा था मुझे नहीं खाना चाहिए। एक अजीब सी अंदर से ही मुझे महसूसता हो गई, मैं नहीं खा सकता हूँ इसको। और इस तरीके से मैंने पोस्टपोन कर दिया, चलो अभी नहीं पर कल सुबह देख लूंगा। पर सुबह जब हुई फिर मेरे सामने आई तो फिर मुझे अंदर से लग रहा था कि मुझे नहीं खाना चाहिए। कोई ऐसा अंदर से आवाज जैसी हो रही थी कि मैं नहीं खाऊंगा इसको, बस अभी मुझे नहीं खाना है। देखता हूँ दोपहर में देख लूंगा करके मैंने दोपहर तक पोस्टपोन कर दी। और दोपहर में मैंने अच्छे खासे सैलेड बना लिया अपने लिए, और फिर वो मेरे सामने आया। मुझे लगा फिर से मैं बहुत ही ये हो गया कि ठीक है शाम को देखूंगा करके शाम तक छोड़ दिया। और फिर शाम को मुझे नौकरी पे जाना था, और मेरे माँ ने बचपन से मुझे एक बात सिखाई कि भोजन को कभी भी व्यर्थ नहीं करना, अर्थात उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए वो मेरे थाली में आता गया इतने बार, तो मैंने थोड़ी बहुत खा ली, और वो मेरी आखिरी बार थी। उसके बाद मैंने कभी भी मांस नहीं खाया। So after not eating the chicken on this particular day, I said to my mother that I am no longer going to eat any fish or any meat or any flesh. So my mother then said to me, well, I don't know what to cook for you. So I said, Mom, it's okay. I will cook for myself. And from then, I started to cook for myself. I never use onions. I never use garlic. And my mom said she doesn't know what to cook for me. So I said, well, Mom, it's okay. I will cook for myself.
तो बस उस दिन के बाद जब मैंने नहीं खाया तो मेरे मन में आया अभी छोड़ देना है। और मेरे माँ ने कहा और मैं जाके अपने माँ को कहा कि माँ देखो मैं अभी चिकन हो, फिश हो या कोई भी मांस मैं नहीं खाऊँगा। तो माँ ने कहा अच्छा फिर मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बनाऊँ? तो मैंने कहा माँ आप निश्चिंत रहो, मैं अपना भोजन खुद बना लूँगा और उस दिन से मैंने अपना भोजन खुद बनाना शुरू किया। So और मैं ना then I कांदा, लहसुन कुछ नहीं उस दिन से छुआ और मैं अपना भोजन बनाना शुरू किया। mm, so I then started to cook for myself, and the sister Barbara, my teacher, she always said to offer food to Baba. So I then started to offer food to Baba, and in the morning, I always wake up in the morning for Amrit Vela, and I would cook my food in the morning after Amrit Vela, and then offer it to Baba. Then when I finish, I would go to class. Yes. But it was so funny. I was working nights, and instead of going home to sleep in the morning, I would go to class in the morning after work. And people, my friends would say, "Aren't you tired?" And I said, "No, I'm not tired." So I went to class in the morning after work. अम, मैं भोजन बनाने लगा, फिर मेरी टीचर बारबरा बहन ने कहा कि देखो तुमको बाबा को भोग लगाकर खाना है। बस तब से जब भी मैं भोजन बनाता, बाबा को भोग लगाता। वैसे मैं शुरुआत से ही सुबह-सुबह अमृत वेला 4 बजे उठने वाला हूँ और इसीलिए सुबह उठता, बाबा को योग लगाता, फिर बाद में मैं अमृत वेले के बाद ही भोजन बना लेता और भोग लगा लेता बाबा को। उसके बाद मैं सीधा क्लास चले जाता। वास्तव में मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, मैं रात को मैं काम करने वाला हूँ। तो रात को काम के बाद ये सब करके मैं क्लास जब जाता था, तो उन दिनों की बात है कि मेरे दोस्त मुझे कहते थे, "क्या तुम थक नहीं गए हो? रात पूरा काम किया, फिर सुबह-सुबह घर जाने के बजाय तुम तो क्लास में जा रहे हो" करके। So every morning after work, I would leave. It's like maybe 2 miles where I live from the center. So when I finish work, I go home, put my things down, and then get dressed to go to class in the morning. And the first time I had Brahma Bhojan in the center, I said to myself, I didn't know that vegetarian food was so nice. And since then, it was like an experience that I am cooking my own food, and what I ate in the center, I tried to reciprocate it. तो मेरा जो घर था, वो सेंटर से 2 मील की दूरी पर थी। तो जैसे रात का मेरा कामकाज खत्म होता, तो मैं सुबह-सुबह आ जाता घर पे और अपने सब सामान रख के, तैयार होके, मैं सेंटर के लिए क्लास करने के लिए निकल पड़ता था। सबसे पहला मैंने ब्रह्मा भोजन सेंटर पे खाया और जब मैं ब्रह्मा भोजन खाया मैं दंग रह गया और मुझे तो बिल्कुल आश्चर्य हो गया कि ये जो शाकाहारी भोजन इतना स्वादिष्ट हो सकता है। बस मैं तब से घर में जो सेंटर पे बनता वो घर में मैं बनाता, उसको मैं वैसे की वैसे बनाने की कोशिश करता। So by that time, I'm going to morning class, and it was this Baba season also. And I heard someone saying that if heaven was on earth, it would be actually in Madhaban. So I thought, oh, okay. And I said to myself, I would like to go to this place, which is called Madhaban. But then the sister in charge said, no, you have to wait, I think maybe 6 months or maybe 9 months. तो उन दिनों में मैं रेगुलर सुबह की क्लास जाता था और एक दिन क्लास में बात कर रहे थे। उन दिनों की जैसे बाप मिलन का समय था शायद, तो इसीलिए सभी अपने आप में बात कर रहे थे आपस में कि अगर दुनिया में स्वर्ग है, वो तो मधुबन ही है।
तो मुझे तुरंत संकल्प आया, मुझे मधुबन जाना है अभी। और मैंने अपनी टीचर बहन को पूछा कि मुझे मधुबन जाना है करके। उसने कहा नहीं, तुम नहीं जा सकते हो अभी, लगभग 6 मास या 9 मास के बाद ही तुम जा सकते हो। So, because I came in January, I had to wait till the following year before I went to Madhaban. So the first time I went to Madhaban was in '98, and I decided to make a special hat, and I put an oval shape Shiv Baba on my hat with a diamond, and I arrived in Diamond Hall. no, at the airport. I'm at the airport. So the brother in the airport, he looked at me and said, I didn't know royalty was coming. So I was looking around, but I Just couldn't a minute. see. Just a minute. Could you please explain? You were wearing a crown of heart with a Yes, oval I shape wore and a special hat. I made a special hat. hat, Okay. Right. and A I put an special oval shape on the uh, hat with a on the diamond in the middle. right. Which And airport then is this? Heathrow or Indian airport? Indian airport. So this is in Ahmedabad. Mumbai? Ahmedabad. Okay. Ahmedabad. So तो the brother then, पहली बार मैं बाबा मिलन के लिए भारत आया, अहमदाबाद एयरपोर्ट में उतरा और मैं एक स्पेशल हैट बनाया, जो सर के ऊपर रखते ना हैट, तो स्पेशल हैट बनाया, उसको बाबा का जैसे ओवल शेप का है ना, वैसा ओवल शेप का बना और बीच में डायमंड चमकता हुआ जैसा बनाया। बस मेरे उतरने के बाद वहां के लोग आपस में बात करने लगे, ये कहने लगे कि हमें पता नहीं है कि राजवंशीय राजघराने के कोई आने वाले हैं इस फ्लाइट से। So the brother looked at me and he was thinking, oh, I didn't know royalty was coming. So I was a bit surprised myself when he said that. So I was looking around to see if there was the royalty around me. And when I realized, Baba said that we should be egoless, viceless, and incorporeal. So I didn't want to feel like I am having ego by saying I am royal. So I said, okay, we're all royal who have just come, but we're incognito. And it was about 30 of us that came on this meeting. तो क्या हुआ, वो भाई ने मुझे देखते हुए कहा, हमें पता नहीं कि कोई राजघराने के राजवंश वाले कोई आए हैं करके। तो मैं वो सुनकर अपने चारों तरफ आजू बाजू देखने लगा, कौन है यहाँ राजघराने वाले करके। फिर मुझे लगा ये मेरे को ही कह रहा था। तो बाबा ने कहा निरहंकार, निराकार और निर्विकार। तो इसीलिए मुझे अहंकार नहीं दिखाना था। तो मैंने उसको बोला कि देखो, हम सब यहाँ राजघराने के हैं और उस वक्त मेरे साथ मिलकर 30 लोग हम आए हुए थे। So after leaving the airport, we went to Lotus House and we stayed for some time in Lotus House, and then we took a bus to Mount Abu, which was a long drive, bumpy, but it was good. And I am looking around, enjoying the scenery. Then we, after some time, I arrived at the rover, and I thought, wow, this is a beautiful place. So I looked around, and I was looking at Daddy Yankee's cottage, and I said, wow, this is a beautiful place. And I had a rush of energy that went through my whole body. I couldn't believe it. So I said, let me walk about 20 yards down and see if I feel the same way. By the time I got to that 20 yards, the inner voice said, you are home.
मैं अहमदाबाद से लोटस हाउस गया और थोड़े समय के बाद मधुबन के लिए निकल गया गाड़ी में। गाड़ी में मेरी जो यात्रा थी बहुत ही इतना अच्छा था, सुखद नहीं, क्योंकि गाड़ी तो ऊबड़-दाबड़ पे जा रही थी, इतना उछल-उछल कर ले गया। परंतु मैं फाइनली ज्ञान सरोवर पहुँच गया और ज्ञान सरोवर में चारों तरफ देखकर मुझे लगा ये सच में बहुत खूबसूरत जगह है। और उसके बाद मैं दादी कॉटेज पे गया और दादी कॉटेज पे जैसे मैं देख रहा था, मेरे अंदर एक अजीब शक्ति प्रवेश की और मेरा पूरा शरीर को वो पार कर गई वो शक्ति। और मुझे लगा क्या ये जगह ही शक्ति है या फिर और कोई जगह में भी मुझे शक्ति का अनुभव होता है। ऐसा करके मैं देखूँ 20 गज के दूरी पर क्या ऐसे ही महसूस होगा? तो मैंने 20 गज के दूरी पर जाके खड़ा हुआ और फिर मुझे महसूस करने लगा, फिर देखने लगा कि क्या यहाँ भी शक्ति है? परंतु मुझे आवाज़ आया कि तुम अपने घर में पहुँच गए हो। So that was like my first day in Madhuban. My second day, we went to Pandav Bhavan, and I walked into the courtyard and I saw like there were some chairs around in the courtyard, and I was looking at the writing on the wall, and it says, "Welcome to Dada's home." But there was a sister. I didn't know who she was, but I got to realize that it was Daddy Prakashmani. She was sitting in the chair and blocking the writing, so I couldn't get to read it properly. And as if Baba says, "Child, get up out of this chair so this child can see what is written on the wall." And it says, "Welcome to Dada's home and your home." And yesterday, when I was in Gansarover, the voice says, "You are home." And the next day, I go to Pandav Bhavan, and it says, "Welcome to Dada's home and your home." So I was like, wow, wonderful. तो मैं पहला दिन का मेरा अनुभव ऐसा रहा ज्ञान सरोवर में। अब दूसरे दिन मधुबन में मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। मैं पांडव भवन गया और पांडव भवन के जो शुरुआत में ही एक ऐसा लिखा हुआ था कि बाप दादा के घर में आपका स्वागत है। पर वो लिखत ऐसा था, उसके सामने कुर्सी डालकर एक बहन बैठी थी। उस वक्त मुझे पता नहीं था और वो दादी प्रकाशमणि जी थी और एक ऐसा जैसे लग रहा था कि बच्ची बाबा की आवाज की तरह कि बच्ची उठकर हटो, बच्चा आया है देखने के लिए। तो जैसे हुआ ये तो मैंने पूरा पढ़ा कि बाबा के बाप दादा के घर में स्वागत है, ये तुम्हारा घर है। तो मुझे लगा ये बाप दादा का घर भी मेरा घर है और वो भी मेरा घर है। मुझे लगा वाह कितनी विचित्र, कितनी आश्चर्यजनक अद्भुत बात है करके। So I can't remember every day by day experience, but I was listening to the Murley this morning, and I heard a blessing. In the blessing this morning, Baba was talking about can't remember how he actually started, but there was a blessing I received in 2001. And the reason why I'm saying this is because I thought I should share this. I was doing a study for electrical installation in 2001 when they dropped the bomb on the Twin Towers. And someone said to me that if I can pass with honor, and I received a blessing from Gentiben like a few weeks before, and the blessing was saying, because of your disinterest in worldly matter, may you pass with honor. So
my study for electrical installation was, I passed with honor for the electrical installation. So I thought I'd just share this blessing. And it was my first blessing that I received, and it was so appropriate. That's why I'm sharing it today. Would you please repeat your blessing? The blessing, I was looking to see if I could find it actually, but the blessing said, repeat what you said. the blessing said, because of your disinterest in worldly matters, may you pass with honor. And today Baba was repeating the same blessing similarly about passing with honor, you know? Yeah, passing with honors as a jewel of contentment. So मैं हर रोज जो हो रहा था, जो हुआ था, इतनी पूरी तरीके से अभी इतना याद नहीं है, परंतु which day? This is 2011. This is 2001. 2001. Yeah. I'm sorry, I forgot the beginning what you said. I had jumped a bit forward because of Baba was talking about this blessing today. Okay, right. So this is why I thought to share this blessing. Yes. In case I didn't get a chance to share. Yeah. आज का मुरली सुबह जो मैंने सुना, मुरली के वरदान में बाबा ने कहा पास विद ऑनर होने की बात, तो मुझे अपनी पहली वरदान याद आया जो जयंती बहन ने मेरे को बाबा की याद में ब्लेसिंग दी है। उसमें लिखा था, क्योंकि तुम दुनियावी बातों से वैराग्य वृत्ति रखते हो, इसलिए तुम पास विद ऑनर बनोगे। और मैं एक इलेक्ट्रिकल पर्सन हूँ। Your profession is electrical engineering, isn't it? One of them. One of them, okay. So electrical field से है, और इसीलिए मैं वो पढ़ाई पढ़ रहा था, और उसी समय 2001 की बात है, और ट्विन टावर्स में जो बॉम्ब गिरा था, it's bomb, isn't it? Accident, Twin Towers accident. Yeah, वो ट्विन टावर्स की एक्सीडेंट का वो दिन थे, और फिर मैं अपनी एग्जाम में सच में पास विद ऑनर हो गया। बाबा का पहला वरदान, और मैंने अपने जीवन में ये वरदान अनुभव किया। So I thought I had to share this blessing because it was so accurate, because I've never really thought about blessings before, how accurate they were. But since I received that first blessing, I realized that each blessing that I've received is so accurate. And I went to one sister's home, and she had a big frame with some of her blessing in there. And I thought I would do the same thing. So I created a big frame and put a few blessings, and that one blessing, may you pass with honor, is also in that frame. But over the years, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वरदान का महत्व क्या होता है। तो जो वो पहला वरदान मेरे जीवन में इतना अनुभव युक्त रहा, तो मैंने तब से हर ब्लेसिंग को अच्छे से महत्व देते हुए मैंने स्वीकार किया। और एक बार एक बहन ने अपने घर पे बुलाया, और उसके घर में मैंने देखा उसने एक बड़ा अच्छा सा फ्रेम बनाया, और उसके अंदर उसके जो भी ब्लेसिंग कार्ड्स मिले वो सभी उसने वहां पे अच्छे से रखा था। मुझे लगा ये बहुत अच्छा तरीका है, और मैंने अपने लिए भी अपने घर में आके एक बढ़िया सा फ्रेम बनाया, और जो कुछ मेरे को मिला, थोड़े बहुत थे, वो सभी रखा, और उसमें से वो भी ब्लेसिंग है जो पहली बार मुझे मिला, पास विद ऑनर भाव बनने। So I would like to share another experience. Well, after going to Madhaban the first time, 98, I realized that because I was working as a caretaker for a company in Southeast London, and the money that I got was enough for me to go to Madhaban to pay my fare. So every year after going to Madhaban the first time, I decided I would go to Madhaban every year up till 2013.
when someone set fire to the building, and then I lost the job. So I wasn't able to go to Madhuban for a while. But since then, I think I've been to Madhuban since 98. I've been about 13 times. And oh, brother, I don't want to miss anything. 2000 नहीं, साउथ ईस्ट लंदन में एक कंपनी है जहां मैं काम करता था और मेरी कमाई होती थी, और मेरे कमाई साल भर में जाहिर है कि वो एनफ था कि मैं मधुबन जाके आऊं। पहली बार जब मैं मधुबन गया, वो अनुभव मेरे लिए इतना अच्छा रहा कि मैंने ठान लिया कि मैं हर साल मधुबन जरूर आऊंगा, और उसके बाद मैं हर साल आता भी गया। 2013 तक मैं हर साल मधुबन आया, उसके बाद मैं आ नहीं पाया। इसकी वजह यह है कि वो जो बिल्डिंग जहां मैं काम करता था उसको आग लग गई और मेरी जॉब चली गई। कुछ समय तक मैं नहीं आया, उसके बाद मैं जरूर बाबा से मिलने के लिए गया। So once because I was working and I was receiving a Sorry, decent wage. just a minute, only one thing. कुल मिलाकर मैंने अपने जीवन, आध्यात्मिक जीवन में 13 बार बाप मिलन किया। 13 times you met Baba. Yes, 13 times. And I was there about, I think, 2 years ago. And because of, I have a little ill health, which is blood pressure. So I ended up in ICU because of not taking my blood pressure tablets, and because Abu is so high up, so then the air, the atmosphere becomes a bit more thinner. So I ended up in ICU, and it was also my birthday, the Baba's meeting, and I was having a conversation with Baba. I said, Baba, I have come to have a meeting, and I am in ICU, and I want to meet you. So then on the day... Just a minute. So मैं 2 साल पहले मधुबन गया था, बाप मिलन का समय था, और आपको पता है मधुबन हाई ऑल्टीट्यूड में है, और मेरे शरीर में छोटी सी बीमारी है, बीपी, ब्लड प्रेशर, और मैं दवाई भी लेके नहीं गया था, इतना नहीं था करके, परंतु वहाँ उस समय ऐसा हुआ कि मेरी ब्लड प्रेशर बढ़ गई और मैं अस्पताल गया, तो मुझे सीधा आईसीयू में भर्ती कर दिया। और आईसीयू में पड़े पड़े मैं सोच रहा था कि आज बाप मिलन का दिन है और मैं आईसीयू हूँ, और इतनी दूर से बाबा मैं मिलने के लिए आया हूँ आपको, और मैं देखो क्या मैं आईसीयू में हूँ। But that was my last meeting, meeting Baba in 2013. And prior to that, we never used to meet downstairs in Shantivan. We used to meet in Om Shanti Bhavan. I remember one night I was leaving Om Shanti Bhavan to go home. I was staying in Modi Bhavan, and I was staying by myself in that house. And while I was going home, I was looking towards Naki Lake, and I saw a shooting star. I'd never seen one before, and I got very excited, and I said, "Oh, I should make a wish." And I made a wish, and I said to Baba, Baba, I wish to remain peaceful for the rest of my life. And in the morning, when I went to class, Baba says, may you constantly be peaceful. And I thought, wow. That's great. That's very nice. I just want to ask you, the last time you met Baba was 2013 or 2 years before? I think it was 2013. 2013 में मैंने बाबा मिलन अच्छी तरह किया, बाबा से मिला, और but that was the time you felt ill, isn't it? You were in ICU? Yeah. Yeah. So after that, how did you go to meet Baba?
Well, I came out of the hospital and they discharged me from the hospital. So Okay. then I was able to meet Baba on my birthday as well. So it was good. तो वो दिन मेरा जन्मदिन भी था, मैं आईसीयू में था और बाप मिलन भी था, और मैं अंदर से बाबा से बात कर रहा था कि बाबा ये क्या है, इतनी दूर से मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ और मैं आईसीयू में कैसे हूँ। तो ऐसे मैं अब बाबा से बात ही कर रहा था कि वो लोगों ने मेरे को डिस्चार्ज किया और वो मेरा जन्मदिन था और मैं सीधा बाबा मिलन कर पाया। और मैं एक उसी समय एक बार चल के आ रहा था, मैं मोदी भवन में था वहां पे, और ओम शांति भवन में बाबा मिलन होती थी, और मैं चल के आ रहा था नक्की लेक के पास से। तो नक्की लेक के पास से मैंने पहली बार देखा ऐसा कुछ कि पहले अपने जीवन में कभी नहीं देखा। एक गुजरता हुआ सितारा, गिरता हुआ सितारा कहना अच्छा नहीं है, पर गुजरता हुआ सितारा एकदम चमकीले रोशनी के साथ वो ऐसा पास हो गया, गुजर गया, और मुझे लगा कि इतनी खूबसूरत चीज है, इतनी अच्छी चीज हुई, अभी मुझे कुछ तो सोचना है। कहते हैं ना, मेक ए विश करके, कोई तारा गिरता है तो ऐसे मेक ए विश करके कहते हैं। तो मैंने एक अपने लिए एक विश किया कि मैं हमेशा के लिए शांत रहूंगा। मैं अपने जीवन आगे के जीवन में पूरा ही शांति से रहूंगा। और दूसरे दिन सुबह की मुरली में सब जाते ही बाबा ने कहा कि तुम हमेशा सदा शांति में रहोगे, और मुझे लगा ये बात हुई ना। I am mixing the years at the moment, but when I first came back from Madaban, my first meeting, my mom, she looked at me and she was looking, and she was just looking at me, but she couldn't really find the words to say. So she said, "You look well." That's what my mom said. And when I met my first two friends I met after that was they were at this football ground. They were going to a football match, and they were also looking at me in a strange way. And they were looking around, and I'm thinking, what's wrong? And they looked at me, two brothers, and said, they called me by my surname. They said, "Maury, you look peaceful." And I said, I don't just look peaceful, I am peaceful. You know? तो मैं साल को इधर उधर अदला बदली कर रहा हूँ, परंतु जब पहली बार बाबा से मिलके मैं वापस घर आया, मेरे माँ मेरे को देखते ही रह गई, कभी इधर से कभी उधर से देख देख कर बोली, तुम अच्छे लग रहे हो। और उसके बाद मेरे कुछ दो नए दोस्त थे, मैं फुटबॉल ग्राउंड की तरफ जा रहा था और वो दोनों भी वहां थे और मुझे देखकर बोले, मेरे अपने लौकिक नाम से मुझे बुलाया, बॉडी। Am I right? Your लौकिक name is Murray. My Maury. surname is Murray. Maury. Okay. Yeah, like and Daddy Janky, she also makes a phrase. She says, "Don't worry, don't hurry, and don't curry." So Murray, don't worry, don't hurry, and don't curry. भाई बहुत अच्छा, और नशे में बात कर रहे हैं कि दादी जानकी जी हमेशा ये शब्द उच्चारते हैं, डोंट वरी, डोंट हरी एंड डोंट करी। इसका अर्थ ये है कि डोंट वरी मतलब चिंता नहीं करो, डोंट हरी मतलब रश रश नहीं करो, जल्दी जल्दी नहीं करो, और तीसरा डोंट करी मीन्स हमेशा अपना जीवन, बाबा कहते हैं ना, दिन खोया खाने में, रात गवाई सोई के, दिन गवाई खाए के। तो ये पूरा सब्जी खाना बनाने में समय गया, करी। और फिर भाई नशे से अपना नाम भी उसी तरीके से, क्योंकि वो एक ही तरीके से बोलने में आता है, मौरी। तो मौरी कभी हरी नहीं करता, कभी वरी नहीं करता, और कभी करी नहीं करता। तो दादी जानकी के शब्दों को अपने नाम से जोड़कर बड़े नशे से भाई जी बोल रहे हैं। और फिर कहा कि जैसे वो दो उनके नए दोस्त उनको देखकर ऊपर से नीचे तक देखकर बोले, तुम बड़े शांत लग रहे हो।
मैंने कहा, मैं शांत लग ही नहीं रहा हूँ, मैं खुद शांत स्वरूप हूँ। I remember when I first introduced someone to Daddy and the university. There was a sister who I had seen. They were also Rastafarians, and one of them were in a black body, and the other one was in a white body. But they were both Rastafarians, and I said, I would like to introduce you. I would tell you something about this university that I've been going to, and the head of the university is Daddy Janky. So she has so much love. It's like when you throw a stone into the water, you know, it ripples. And Daddy Janky's love is like that. So I'd like you to meet her. So you should come to the university and meet Daddy Janky. So the sister said, if she goes to Africa, when she goes to Africa, she gets that love from there. I said, well, you don't have to go so far to experience love. Come to my university and then meet Daddy Janky. तो मैं नई आत्माओं को दादी जानकी जी से मिलाता था, और ये एक बार दो आत्माएं, दोनों भी मेरी तरह, पहले में सन्यास था ना, तो मेरी तरह सन्यास की तरह थे वो दोनों। एक आत्मा काले शरीर में थी, एक आत्मा गोरे शरीर में थी। उन दोनों को मिलकर बातों बातों में मैंने कहने लगा कि आप मेरे साथ आओ, मेरे इस विश्वविद्यालय में आपको कई बातें पता पड़ेगी, और इसकी खासियत ये है कि इस विश्वविद्यालय की जो संचालिका है वो दादी जानकी जी है, और दादी जानकी जी के पास बहुत प्यार है, और आप जाते ही अनुभव करेंगे जैसे कि एक पत्थर को फेंकेंगे पानी में और पानी से ऐसे प्रकंपन जैसे फैलते हैं, इसी तरीके से आप दादी जानकी के पास जाते ही प्यार के प्रकंपन आप अनुभव करेंगे। तो फिर वो बहन ने कहा, अरे मुझे प्यार का अनुभव करना है तो मैं अफ्रीका चली जाऊंगी और वहां मुझे अनुभव हो जाएगा। तो इन्होंने कहा, अफ्रीका तक जाने की क्या आवश्यकता है, दादी के पास आ जाइए और आपको प्रेम का अनुभव होगा। Eventually, the sister actually came to Baba's house, and she took the course. The English sister took the course. The black sister, she did not take the course, but then the English sister, she said, I need to move closer to Baba's house. So she now lives across the opposite side of the road from the university because she wanted to be close, and was my first person I introduced to Baba and actually took the course and stayed. What's her name? Her name is Toots. Toots, okay. Yes. Yeah, great. फिर दोनों में से जो गोरी बहन है वो विश्वविद्यालय में आई और कोर्स किया उसने, और कोर्स करने के बाद उसने तुरंत बोला, मुझे अपना घर आश्रम के बिल्कुल नजदीक देखना है, और उसने शिफ्ट कर लिया, बिल्कुल आश्रम के सामने ही उसने अपना घर शिफ्ट किया। और वो जो काली शरीर में आत्मा थी ना, वो बहन नहीं आई, परंतु ये आई और ये बाबा की पक्की बच्ची बन गई। उनका नाम है टूट्स, और वो मेरी पहली ऐसा है आत्मा जिनको मैंने इस बाबा के पास लेके आया, विश्वविद्यालय को परिचय कराया। So she just, I was a bit, I don't know if I was surprised, but she came and took the course, and after taking the course, she lived like maybe a mile away from the university, but then she said she wanted to be close to the house. She sold her house, or other house, and moved across the other side of the road. And this is where she's living up to today. And she's a school teacher. ये जो सिस्टर टूट्स है, ये एक स्कूल टीचर है। तो वो घर तो लिया, पर फिर भी वो उसको लग रहा था कि दूर है, मुझे और नजदीक बाबा के घर के पास आना है। ऐसे संकल्प करके उसने अपना जो घर लिया वो बेच दिया, बेच के 1 मील मतलब बहुत ही नजदीक दूसरा घर लिया। वो आज दिन तक उसी घर में रहती है। Because of the job that I
I was doing from my early days. I did carpentry, painting, decorating, a teacher, a martial art teacher, and other things. So I used to go to sister's house or brother's house and decorate their house for them. And whenever they have an inauguration, Daddy Janky would inaugurate their house. So the first time I remember meeting Daddy Janky, it is a sister across the other side of the road, and she inaugurated her house, and Daddy Janky came, and that was my first time to be in the company of Daddy Janky one-to-one. And it What's was the name of very, the sister? Sister Joan. Sister Joan. Yes, she lives across the other side of the road. तो मेरे जीवन में मैंने कई जॉब्स किए हैं. एक कारपेंटर की तरह अर्थात लकड़ी की काम करने वाले, डेकोरेटर की तरह अर्थात सजावट करने वाले फूलों से इत्यादि चीजों से सजाते हैं ना, कोई भी अगर इवेंट है तो सजाते हैं, इस तरीके से एक डेकोरेटर की तरह. और व्हाट वाज द थर्ड वन? आई एम सॉरी. A self defense teacher, martial art. सेल्फ डिफेंस टीचर. मैं मार्शल आर्ट्स टीचर, आप सबको पता है ना, मार्शल आर्ट्स मतलब जो कसरत नहीं, परंतु वो एक किस्म की सेल्फ डिफेंस, स्वयं को बचाने का तरीका है. कराटे, जूडो, कुंफू की तरह ये भी एक मार्शल आर्ट्स है. तो ये मैं सिखाता था. और इसी समय पे ऐसे ही एक बहन ने अपना घर का ओपनिंग सेरेमनी, इनॉग्रल सेरेमनी रखा और उसके घर को सजाने का मौका मुझे मिला, और वो है सिस्टर जोन्स. और वो बिल्कुल सेंटर के नजदीक थी, और उनके घर की ओपनिंग में दादी जान की आए थे, और पहली बार मेरी मुलाकात दादी जान की जी से हुई. So my name got to go around the center because each one knows that I can do this work, painting and decorating. So my name got moved around the center. So there's many houses that I do decorating, and each time I decorated someone's house, Daddy would come and inaugurate the house. So I'm always in Daddy's company, and I felt so happy just to be around Daddy, you know. इसके बाद क्या हुआ, मेरा नाम सेंटर में मशहूर हो गया. हर व्यक्ति को पता चल गया मैं पेंटिंग भी करता हूँ और सजाता भी हूँ, डेकोरेट भी करता हूँ. और फिर मेरे को काम मिलने लगा, अर्थात ये सेवा मिलने लगी. तो हर कोई बुलाता था, मैं उनके घर को पेंट करता और अच्छे से सजाता, और दादी आती वहां पे. और फिर वो होने के बाद दूसरे कोई फिर मुझे बुलाता उसे देखकर. तो इस तरीके से मेरा सेवा बढ़ता गया और दादी आती गई. फिर मैं दादी से ज्यादा मिलने लगा. ये बहुत खुशी की बात है कि मैं दादी के अंग संग में काफी समय बिता पाया. There was one inauguration that I also like to share. It was about 30, maybe 30 brothers and sisters meeting, and Daddy was coming to inaugurate this house. And when I looked at the gathering of the brothers and sisters who were there, I said to myself, I'm the only Afro-Caribbean person in this house. And I thought, wow, I'm so fortunate to be in this gathering. And there was tears running down my eyes for like half an hour. And I'm thinking, I mean, all these other people that are around, there's none of them there, but I am there. So I felt so special. The tears was running down. Now, all are there, isn't it? The 30 people were there under the same roof. In the same room, yes. But the tears was running down my face, and I'm having a dialogue with the inner voice. The inner voice is saying, like one voice was saying, wipe the tears, and the other voice is saying, no, don't wipe it. So I left it, and just before Daddy Janky came, the tears just stopped. I thought, wow. But it was wonderful. मैं आप सबको एक अनुभव सुनाता हूँ. इसी तरीके से एक घर की गृह प्रवेश थी जहां मैंने ये सजाने का काम किया, और वहां लगभग 30 भाई बहन थे,
और 30 भाई बहनों से मिलने के लिए दादी वहां पे दादी को आना था। और जब मैं उस कमरे में बैठा, पूरा कमरा ये 30 भाई बहनों से भरा हुआ था और मैंने सबको देखा, मेरे जैसा कोई नहीं, अर्थात मैं एक अकेला अफ्रीका से था। Was it Africa or Africa? From where? From Africa? The sister? No, no, yourself. Where from Oh, Africa? I'm from originally from Jamaica. जमैका। तो अफ्रीका जमैका से मैं अकेला वहां पे व्यक्ति था और मेरे अंदर इतना मतलब उसने इतना नशा अनुभव किया कि ये सबके बीच में मैं एक ही ऐसा आत्मा हूँ और खुशी के मारे नशे से मेरे आंसू बहने लगे और आधा घंटा आंसू बहते रहे और मेरे अंदर से एक आवाज आया, क्यों आंसू बहा रहे हो, पोंछ दो। और एक आवाज आया, नहीं नहीं पोंछो नहीं। और जैसे दादी जान की आई, मेरे आंसू अपने आप रुक गए और ये भी एक विचित्र अनुभव रहा मेरे लिए। I also remember one day we had to go to Baba Bhavan to meet Daddy Janki. I was a bit late, so the meeting had started, and then someone said to me to go to Baba's room. So I went to Baba's room upstairs, and I spent about 5 minutes in Baba's room. And on my way out of the room, I said to Baba, Brahma Baba, subtly, I said, Baba, you are the most fortunate because you are God's chariot. And he says, no, child, you are the most fortunate. And I said, oh, okay, Baba, because I have now come to know who God is. So when Baba says that you are fortunate, I realize how fortunate I am because there's other people who are out there, they don't even know who God is. And I have come to know who God is. So I said, Baba, you are right. I am most fortunate. मैं आपको एक और बात सुनाता हूँ। एक बार मुझे बुलाया गया दादी के साथ बाबा भवन जाने के लिए और उस दिन मेरे को देरी हो गई और देर से गया और मीटिंग शुरू हो गई वहां और फिर मुझे बोला गया बाबा के कमरे में बैठने के लिए और मैं बाबा के कमरे में बैठा और बाबा से बात कर रहा था और बाबा को कहा कि बाबा आप कितने भाग्यशाली हो, आप तो भगवान का रथ हो। तो मुझे आवाज सुनाई दिया कि बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, मैं मुझसे ज्यादा तुम भाग्यशाली हो। उस वक्त मुझे सोच रहा था, परंतु मुझे पता पड़ा कि हाँ सच में मैं कितना भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे भगवान का परिचय मिला और बाहर आते ही मैंने देखा कितने सारे लोग हैं और किसी को भगवान का परिचय ही नहीं है। So when it come to Baba's house, I was told that we should be able to give something back in return to Baba for what Baba has given to us. And I thought, what can I do? And then someone said, would you like to be in security? So I decided to go to security. And there's a Germany Ben also is literature. So I was helping Germany in literature. I was helping in security and also in the cleaning. So it's giving something back to Baba. And this is the savor that I've been doing for Baba's house. मुझे फिर यहाँ बताया गया कि भगवान जो देता है उसका रिटर्न भी देना है। तो फिर मैं सोच रहा था कि कैसे मैं भगवान को रिटर्न दे सकता हूँ और क्या मेरे पास है और मैं क्या दे सकता हूँ भगवान को। फिर मुझे एक सेवा मिला कि मैं सिक्योरिटी जॉब भी कर सकता हूँ, तो मुझे सिक्योरिटी की सेवा मिली, फिर क्लीनिंग की भी सेवा मिली। 3 things, isn't it? Security, cleaning, and what's the third one? What's the third one? Security, cleaning, and literature department. लिटरेचर डिपार्टमेंट। जर्मनी बहन वहाँ के लिटरेचर डिपार्टमेंट की इंचार्ज है। उनके साथ मैंने कई सेवाएं की, उनको मदद की लिटरेचर के विषय में। इस तरीके से मैंने ये सब सेवा की बाबा के घर में। And I've been doing security now for maybe over 15, maybe even more than 20 years. And I used to do one night and one afternoon, but since the corona,
We are not doing any nights at the moment, but I'm still doing security from day one till now. And now it's only one on a Sunday afternoon. I do one afternoon, but because there's so much love for Baba, you know, people say to me, why are you doing this and you're not getting any pay? So I says, well, there is some pay that you get which is visible, and some pay that you get is not is invisible. And this is why I do what I do. तो मैं लगभग आप कह सकते हैं 20 साल से मैं ये सिक्योरिटी की सेवा कर रहा हूँ और मैं ओवरनाइट नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी की ड्यूटी करता हूँ यहाँ ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस में और पूरा दोपहर की एक सिक्योरिटी की ड्यूटी करता हूँ। तो उस वक्त तो ऐसा था कि ऐसा पूरा समय करते थे हम, परंतु अभी कोरोना की वजह से नाइट शिफ्ट तो है नहीं, इसलिए संडे दोपहर की मैं सिक्योरिटी की सेवा करता हूँ। लगातार पहले दिन से ही मैं ये सिक्योरिटी की सेवा करता आ रहा हूँ। लोग तो मुझे कहते हैं तुम्हें पैसे नहीं मिलते, तुम क्यों ये नौकरी कर रहे हो? और मैं उनको खुशी से कहता हूँ देखो कभी कभी कुछ करना, वहाँ दो प्रकार की बातें होती है। एक, आप जो कमाते हो आपकी कमाई दिखता है और दूसरा कमाई दिखता नहीं है, और मुझे वो दूसरी कमाई यहाँ पे मिलता है। I am also a gardener, and you know, Baba says how he would like to make us an all-rounder. So there's lots of things that I do, and gardening, I enjoy gardening. So Baba's house, there's many gardens. So I go to the bhavans and I do help in the garden. So in Baba Bhavan, or all the bhavan, sisters bhavan, the brothers bhavan, I go there and I do what I can do, always helping. तो मैं बगीचे भी संभाल सकता हूँ, तो उस विषय में भी मैंने सेवाएं दी है। बाबा के घर के बगीचे काफी है, बाबा भवन है, बहनों की भवन है, भाइयों का भवन है, और बाबा के अनेक सेंटरों पे जहाँ जहाँ गार्डन है वहाँ सब मैं सेवाएं देता हूँ। ये बाबा कहते हैं ना ऑलराउंडर बनो, सो इस वजह से मैं सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ और बाबा मेरे को सेवा देता है। ब्रदर, it is 10:35 p.m. in Bharat now. So my time is up. Yeah, in Lagos it is 6:05, and actually 6 o'clock we have Yoga Ka Sahyog, that is meditation from 6 to 8 online. Okay. So what are we going to do now? Just thank you again with these wonderful flowers for coming to this great one family platform and sharing your life experience, especially the experience of connection with Baba. And Brother Minesh is with us. I would like to share one more experience. And although I was brought up in a Christian family, I was never one for actually asking or praying. But I remember in 1971, before coming to Baba, I was in hospital for 9 months in 1971. I had something called ulcer, and I stayed in the hospital for 9 months, and I recovered. I had to have about 10 pints of blood transfusion, and if my mom had to sign the paper, she would not have signed the paper because she's a Jehovah's Witness, and she would not have signed the paper. So I signed the paper myself. When my mom came into the hospital to see me, she almost collapsed because she could not believe that her son was in this position. But somehow I signed the paper myself and I have survived. In 1970, so what's the signing of the paper? What is the signing of the paper? Is it a medical document of the hospital that you signed? Yes, I have to give permission to them so that I can take the blood transfusion. But my mother would not have signed the paper, so I signed the paper myself. Why was that? Is it against the Jehovah principles? Yes, it's against the Jehovah's Witness principle. So I would not have been having this conversation with you today
if I was any younger or if my mom had to sign the paper. And in 1974, I end up back Let in me just hospital complete again. this, please. Let me just complete this. भाई कह रहे हैं कि मैं बेसिकली बचपन से ही मैं क्रिश्चियन धर्म का हूँ, पर मैंने इतना ज्यादा कभी प्रार्थना की और नहीं थी मेरी मन। पर 1971 में बाबा के पास आने से पहले मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी हुई और मैं अस्पताल में 9 महीने रहा। उस 9 महीने में मुझे 10 पॉइंट ब्लड की आवश्यकता हुई और मुझे एक डॉक्यूमेंट हॉस्पिटल में साइन करना हुआ, जैसे देते हैं ना, मतलब देखभाल बहुत ही सीरियस जब हो जाता है तो डॉक्टर्स को वो साइन करके दे देते हैं कि आप अपनी मर्जी से अभी मेरा ख्याल रखो, जो जो चाहिए कर सकते करके। तो वैसा डॉक्यूमेंट था और मुझे साइन करना था। मेरे माँ को साइन करना था, पर मेरे माँ ने साइन नहीं किया क्योंकि उन धर्म में ऐसा है कि वो इस तरीके से कोई भी हस्ताक्षर नहीं कर सकती है कोई भी पत्र के ऊपर। तो मैंने खुद किया और जब मेरे माँ मुझे देखने के लिए आई, वो अपने बेटे को इस हाल में देखकर एकदम जैसे कि चक्कर आके ऑलमोस्ट गिरी गई, क्योंकि इस ऐसी अवस्था थी मेरी। प्लीज कंटिन्यू। So in 1974, I was back in hospital again for something different. And I spent another 9 months in hospital. And at that time, I was having this dialogue with myself. And I'm saying, you know, Father, you say, as a Christian, Father, you say, ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and it shall be open. Can you And please repeat this? say, knock and it shall be open. Seek and you shall find. Ask and it shall be given unto you. So I'm saying, Let me just well, complete this. मैं okay. 1974 में 1974 में फिर से मैं अस्पताल में भर्ती हुआ। मैं बीमार था और फिर मुझे वापस अंदर से लगने लगा और अपने आप से मैं स्वचिंतन कर रहा था, बात कर रहा था कि क्या है। तो मेरे को ये सुनाई दिया कि तुम खटखटाओगे तो दरवाजा खुलेगा, तुम पूछोगे, चाहोगे, मांगोगे तो तुमको मिल जाएगा। And what was the third one? The After third the one, seek. ask and it shall be given. Ask and it shall be given. तुम चाहोगे तो मिल जाएगा और तुम पूछोगे तो तुमको दिया जाएगा। So this is the belief of Christianity. And I was having this conversation with God, with Baba. At the time, I didn't know his name was Baba. So I said, Father, I am only 20. I haven't really lived any life. And asking to grant me a longer life so I can experience life. And that was when I was 20. And now I am 65. It was my birthday this month, and I am 65. And, you know, I give thanks to Baba and the drama, because if I had passed, if I had left the body, maybe I wouldn't have come to Baba. So I am so fortunate that I've come to Baba and taken Baba's knowledge. क्रिश्चियन धर्म में ये मान्यता है कि आप दरवाजा खटखटाओगे तो दरवाजा खुलेगा, आप चाहोगे तो आपको मिलेगा, आप मांगोगे तो आपको दिया जाएगा। ये क्रिश्चियन धर्म की मान्यता है। उस वक्त मैं अस्पताल में पड़ा, मैं भगवान से मन से बात कर रहा था और मैंने बोला कि भगवान, मुझे अभी मैं 20 साल का हूँ और मुझे ये बीमारी आई है, तुम मुझे थोड़ी सी जिंदगी दे दो ताकि मैं लंबे समय तक जीऊं और जिंदगी को अनुभव कर सकूं। बस उसके बाद आज मैं 65 साल का हूँ और मुझे बाबा मिला। उस वक्त मेरी जो सोच थी, मुझे जो जिंदगी मिली, मुझे बाबा जिंदगी मिली तो बाबा मिला मुझे, तो आप सब परिवार भी मिले। और अभी इस 65 वर्ष में ये महीने में मेरा बर्थडे भी गया। The birthday is past this month? Yes, it was on the 5th. On the 5th of April. So many happy returns of the day. सभी जोरदार तालियां बजाएं। भले अनम्यूट में हैं तो सभी तालियां बजा रहे। Brother, everyone is clapping and greeting you and giving you good wishes for your birthday. So may you have a long spiritual life, and may you also make everyone's life long life and long lasting life with full of spiritual experiences. And share spiritual experiences with everyone
and help everyone to come under the canopy of Baba's protection. Thank you I so much cannot- for that wonderful sharing. I cannot do anything more than share Baba's knowledge with others. So Very true. thank you again for inviting me. थैंक यू। भाई जी कहते Thank you, हैं मैं बाबा। क्या कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ भगवान का ज्ञान ही सभी को बांट सकता हूँ। बस आपने हमें बुलाया, शुक्रिया बाबा को, शुक्रिया आप सबको, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू। Om Shanti. Thank you. We felt your love for Baba during this session, and what a great intoxication within you. We felt like this. So very nice, and thank you for sharing. Thank you for your time. Thank you, Baba. Now we will sit for a minute in a silence, and then we'll finish. Okay. तो इवन आपको पूरा करना पड़ेगा, मीटिंग एंड आप करना, आपसे होगा, मेरे से हो नहीं पाएगा। मेरे पास भी लीव है, एंड नहीं है, एंड इज विद ब्रदर ईस्टन बिकॉज ही इज अ होस्ट। Brothers, you will have to finish the meeting because the master key is with you. Okay, so what do I do? So we Today just sit you are for a the minute? master. Today you are the master. So we will sit for a minute in silence, and then after that there is a red column where end is written. So you have to choose end on the right side of your screen. Choose end, and in that also end the meeting. Thank you, Jay. Okay, so we sit for a minute. Yes, please. Thank Baba. Thank you, Baba. Thank you. Om Shanti. Shanti. Now please click on the finish meeting. Okay, so end. Just click on end. End meeting. Okay. End. Yes. Thank you, G. No, you haven't click on end meeting. Oh, I did.